యాక్టివేట్ చేయాలంటే फेरी चढ़ने जा रहे हैं। Peacock in front of us. Ooh. So this line you are seeing, this line, this junction, this is where NH44 starts. ये जो दिख रहा है लाइंस और ये पार्ट, यहाँ से NH44 शुरू होता है एक्चुअल हाईवे, विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया. इट एंड्स इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर. From here, that left you can see the hills. So उसके पीछे केरला. Like it's very near. A lot of windmills here. Thousands. वहाँ ऊपर बारिश गिर रहा है. It's so huge. Time is 5:51 and अब यहाँ पे लंच किया है. ये ज़्यादा दूर नहीं है. मैक्स टू मैक्स 20 किलोमीटर कुछ है. We break and then we will leave. It started raining again. Rain cover सब डाल के फिर शुरू किया राइड. We have not even done 100 kilometers and we have already stopped 3 to 4 times. Time right now is 8 p.m. Till now we have done 120 kilometers only. Madurai is another 120 kilometers. So 2 घंटे में पहुंच जाना चाहिए मैक्स टू मैक्स. So 10 बजे तक we will be there in Madurai. जल्दी सोना है मुझे क्योंकि कल सुबह as early as possible I have to start to Bangalore. लास्ट 15 किलोमीटर से जो टाउन के अंदर से जाना है मदुरई टाउन. The next day. Good morning. This is the next day. Time right now is 5:30 and I am in Madurai. Trip reset. अभी मैं तो निकला बेंगलुरु. उसके लिए लगेंगे 8 घंटे एज पर गूगल. यानी अभी 5:30 हो रहा है. आई वुड बी रीचिंग बाय आफ्टरनून 2 o'clock. अगर गूगल टाइम से जाएंगे तो दोपहर को 2 बजे पहुंचेंगे. बट हियर वी हैव अखिल्स टाइम. आई हैव टू रीच बेंगलुरु बाय 12 PM. 2 घंटे पहले पहुंचना है. One of many things which I like about Tamil Nadu and South Karnataka is the standard filter coffee. In Hyderabad, we get filter coffee in very less places, but यहाँ पे हर जगह पे मिलेगा. We are crossing Salem. Time right now is 8:45. अभी बेंगलुरु है another 200 kilometers. यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद ज़्यादा रुकना ना पड़े. So I am on to the nice road. Started from Bangalore. Time right now is 1:30. बीच में थोड़ा शॉपिंग है. Okay, then I would be leaving almost by 2:33. Directly
to Hyderabad. मैं एक्चुअली निकला था अराउंड 1 o'clock, अभी 3 o'clock हो रहा है. तो 2 घंटे लगे मुझे शॉपिंग करके, पैक करके सब कुछ. So just took a break at Nandi Upachar. This is the place where I stop every time. Morning breakfast, lunch, dinner. It's just amazing place. अभी थोड़ा कॉफ़ी पी के then started towards Hyderabad. I have to be careful. There will be a lot of speed camps on this route. मॉर्निंग टाइम में तो भर जाएंगे, वीकेंड में. सो वी आर एट द किया फैक्ट्री. आ गए. 140 kilometers डन in 1.5 hours. I came across these 2 Hayabusas. I think they are coming from Bangalore and taking a U-turn back to Bangalore. Such an amazing machines here.